my duty, my honor, my privilege to welcome him on stage. Right, so let me introduce the legend, known for his calm under pressure, a captain who found glory whenever he led his troops, the only captain in history to win 3 ICC trophies and claim 5 IPL titles, leading Chennai Super Kings to become the most successful IPL team in history. He took Team India to the top of Test rankings for the very first time in 2009. A keeper who holds the record for the fastest stumping in the history of the game. A recipient of Padma Bhushan, Padma Shri and Rajiv Gandhi Khel Ratna awards. Ladies and gentlemen, please put your hands together and make some noise for the one and only who has made an entire nation proud, the Captain Cool, the Lieutenant Colonel, and our very own Mahi. Give it up, give it up, give it up for Mahendra Singh Dhoni! Welcome this evening, sir. So everybody was waiting for you to come here. How are you feeling, sir? How are you feeling? Welcome to this show, sir. I am having goosebumps, I am having shivers. My God. He's a very good evening. I wish मेरे में भी इतनी energy होती, you know, so but it's good to be back. Last time जब हमने event किया था, it was a lot of fun. So benchmark थोड़ा ऊपर है. I'm just hoping that today's evening also is hopefully a lot of fun. And Goa is slightly laid back, so automatically energy level थोड़ा नीचे आ जाता है, you know. So good to be here. You know, it's last few days have been quite nice, quite relaxed. So hopefully the evening will be, you know, very good. So thank you so much for being here. Once again, please put your hands together for my bhai guy. Come on, come on, come on, people. And I request everybody to please settle down. I request Mr. Swaplin Saurav sir to please do the honors and present a token of love and appreciation to our very own, the face of Rigi. Right, he is ours. He has given us his time. We are absolutely glad. Thank you so much, sir. Thank you so much for doing the honors. Now, it's time for the next segment. Yo, yo, yo. Welcome to this segment, guys. The OG gang is here with us. The legend, our very own MS Dhoni sir is here with us. He has only joined us. Let's welcome everybody, the rest of the panel. So, अगर आपको ये lines थोड़ी सी वाकिफ लग रही हैं, so you must have understood मैं किनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, right? Ladies and gentlemen, get ready to meet the man who's made us all laugh, even when the screen was buffering. From co-founding AIB, delivering countless laughs to ruling YouTube with his humor and charm. He's done it all, and he knows exactly what his viewers want. Please welcome the king of punchlines, the OG of content creation, tanmay bhat. Yes! Yes, he's here, and don't worry, he has promised that he won't be roasting anybody. I think still, I don't know. Welcome. Okay, so joining him on the panel, ladies and gentlemen, up next is someone who's even cooler than his nickname, Kullu. From playing it on YouTube to owning the stage with his comedy, he's been turning everyday moments into hilarious stories. A member of Tanmay's OG gang. Let's give it up. Put your hands together for Aditya Kulshrestha, aka our very own Kullu. Welcome, bhai. All good, bhai. कैसे हैं आप? And joining them on the panel, the beauty with brains. Alright, fam, keep that energy going. Next up, we have a true storytelling visionary who transformed simple street moments into powerful narratives. Through Humans of Bombay, she's created a platform that's inspired, connected, and touched hearts across the nation. Ladies and gentlemen, let's welcome the queen of stories, Karishma Mehta! Guys, energy thodi kam hogi. Guys, I need more energy, otherwise they won't be speaking, they won't be talking. I'll say 3, 2, 1. Cheer the loudest, clap the hardest. Let's do it in 3, 2, 1. Thank you so much. Check. भाई इनके लिए भी एक बार ताली बजा दो प्लीज प्लीज
मतलब ऐसा इंट्रो लिखा है कि पूरा का पूरा पढ़ना जरूरी था, मतलब सबके लिए. थैंक यू वेरी मच. माय भाई, हाउ यू डूइंग? Well, surviving, getting old. You're definitely not getting old. Huh? How many of you think he's getting? He looks younger every year, no? हमने इस बार का सीजन देखा सर. बॉडी में ऐसी ऐसी जगह रोज दर्द होती है ना. अच्छा, यहाँ भी दर्द हो सकती है. Then you realize, अच्छा कल ऐसा किया था तो उसके कारण. Other than that, you know, God has been kind. But can I ask you one thing? Last time उन्होंने कम पेमेंट दिया था क्या? Last time? Did they give you less payment last time? इस बार आधा तन्मय आया था, पिछली बार पूरा तन्मय आया था. No, but congratulations, you know, you have lost a lot of weight. Thank you, my boy. Keep Appreciate. So let's just begin. हाँ, बिल्कुल. my boy, पहला सवाल जो मेरे को बहुत टाइम से जानना था, जब से हम वर्ल्ड कप जीते तब से मुझे जानना था, ठीक है? तो आपने भी इस बार का T20 वर्ल्ड कप आप भी देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे आप, और क्या आपने भी हमारी तरह 15th ओवर में टीवी बंद कर दिया था? नहीं, हम लोग घर पे थे. वी वर वाचिंग, सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर ओवर, सो ऑफ कोर्स सेकेंड इनिंग्स जैसे चलने लगी तो ज़्यादातर दोस्त बाहर चले गए. आई वाज द ओनली वन सिटिंग, यू नो, डूइंग इन एंड आउट. लाइक, अरे खत्म हो गया, चलो ना हमारे साथ. हम लाइक, यू नो, इन क्रिकेट जब तक वो खत्म नहीं होता है ना, इट्स नॉट ओवर. None of them believed. Even, you know, I was questioning it in the sense, you know, you want the team to win, but अंदर वो होता ही है कि यार अभी क्या होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए. And one of the things that I firmly believed was, you know, उनके जो batsmen थे, they were slightly light on the batting order. And हमने ऐसा देखा है कि क्रिकेट में जब प्रेशर जोर का पड़ता है तो कुछ भी हो सकता है, you know. So there was a time when they were firmly cruising, you know, but when the stakes are high, you know, when it's very crucial, when the games are big, you know, you get a chance and you want to make the most of it. So I feel we were able to do that, and that's why we won the trophy. And, you know, big congratulations to the guys who were on the field, because that's the kind of energy, motivation and belief, you know, that is needed. That, you know, doesn't matter whatever the result may be, but till they don't win and it is not called that they have won the game, we need to keep pushing, and that was the attitude. आप जब अभी मैच देखते हो तो आपके अंदर का कैप्टन अभी भी चिल्लाता नहीं है कि कौन रखता है लॉन्ग ऑफ, यार भाई मिड ऑफ लेके आओ, यार स्पिनर को क्यों डाल रहे हो अभी? Like, does the captain keep talking in your head? No, for a simple reason. When you are inside on the field, you get a lot of vibes, so your chances of absorbing what is happening is much more. So I don't think all of that, but like a spectator, my heart rate goes up. And the one thing I've realized is, one, I'm actually playing on the field, my heart rate is more controlled. But when I'm outside watching the game, you know, it actually behaves like a fan, you know. Okay, I may read the game better, but the heart rate is, you know, it's going through the roof. Yeah. Maybe it's simple that, you know, I want a certain result, and the result is like you want to win every time. So because we want that result, that the heart rate goes through the roof. I think that's shocking, because every time you're actually on the field, and I'm a huge cricket follower, I've followed everything. So when you're on the field, it seems like you're almost calculating an IPL, right? So how are you keeping it cool on and off? Like, how's the balance for you? When I'm off in the sense, you know, I don't think a lot about cricket. I'm only playing IPL as of now, so it's slightly tough in the sense I have to keep myself fit for 9 months so that I can play 2.5 months of IPL. So you need to plan it out, but at the same time, you know, chill a bit. I've played international cricket for quite long, so you want to spend time with your family, with your parents. I have a lot of pets, so, you know, get a chance to play with them. So I've kept it very simple. You know, I'll train for 15-20 days, 25 days, then I take off for 15-20 days. So it really helps me be in the groove. I can enjoy the food that I want to eat. Once I start training, you know, I follow a good diet. I won't say an excellent diet. So that's what keeps me busy. And in between, we have a few endorsement works and everything. So that helps. And I've been watching a lot of cricket. You know, when I was playing, I used to watch less, but now that I'm not playing international cricket, every time there's a game going on, and I love to sit and watch, unless the result is decided. A lot of times in T20 and 50 overs, what we have seen is, you know, right after the 10th, 12th over, you know, what are the chances of happening, you know, in the game. So other than that, I've been a keen watcher. What's a day in the life of Mahendra Singh Dhoni today? When you're not playing, like, what do you do?
Well, the schedule is slightly different. Different depends on where I am. So let's say if I'm in Mumbai for endorsement work and all, then what dictates is what time they are calling me on the set. So according to that, I set up. So when I'm in Ranchi, it's the schedule is quite fixed in the sense I'll get up slightly late because I sleep late. I get up slightly late. Have my breakfast, then straight away go to the stadium, do my gym or whatever I want to do. Then come back, spend some time with the family, play with the pets, and evening if I feel like I'll go again to the stadium, play a bit of badminton or tennis, some of the other sports. And in between we have a farming area, so on and off, I go over there. So it's quite regimented in the sense it's almost the same schedule every day, so it is quite boring. But other than that, I've not been doing much. In between, bike rides and all, but not for long. The tractor reel went viral very recently where people were like, oh my god, he's also farming. You can do everything. But whenever I go back, I have to take lessons in the sense, in a tractor, and especially with all the accessories, how to move and all, because if you're not regular, you tend to forget, what needs to be done. But once in the sense, once you know how it is done, then whenever you go back, they just orient you and you're like, okay, I can do that. But it's tough, sometimes I've bitten more than I can chew. But it's fun, farming is fun. ठीक है, IPL के बारे में दो सेकंड बात करें. हाँ सर, इस बार आप पता नहीं क्या चीट कोड लगा के आए थे, हर बॉल पे 6 मारते थे और लाइक फर्स्ट टाइम यू वर नॉट कैप्टन दिस ईयर. और आपको अजीब लगता था जब DRS के टाइम एम्पायर आपको देखता था अभी भी? They would expect you to take the DRS. नहीं, being a keeper, captain always consults the wicket keeper. Reason simple होता है क्योंकि from behind the stump you know where the ball has pitched more often than not, unless you are blinded by the batsman in front. And more often than not, most of the captains, they don't trust the bowler because their expression is the same. out है, ले लो, एकदम खत्म है, मतलब बैट्समैन को वापस जाना ही है. And then you realize it was not even close. आपके टाइम पे कौन बोलता था कि ये नहीं है? कौन नहीं बोलता? मतलब sometimes T20 में एक reviews भी होते थे, only one review. Everybody is asking for it, so you have to be very careful. And you want to give that liberty to the bowler, but then I realize हर कोई बोलता है कि आउट ही है, and हर बार डिसीजन हमारे फेवर में नहीं होता है. So a few times we put the ball in the bowler's court कि यार अपने जान का बाजी लगा कि ये रिव्यू लेगा, मोस्ट टाइम नहीं लेते, नेक्स्ट टाइम देखते हैं. So I only said that if you think it is out, it should at least be an umpire's call. It can't be like you think it's hitting the middle stump and it ends up hitting nowhere. It has pitched outside and going outside, so that is wrong. So if you're not sure, give whatever your feedback is, because keeper also from behind, at times we don't know where exact the impact is. And at times we don't know where the ball has pitched. But being a bowler from front, should be able to analyze that, what was the height of the ball and all. So if we share the responsibility, decision making becomes easy. आपसे तो अपोजिट टीम वाले भी पूछ रहे थे क्या लग रहा है? नहीं, मैं दूसरे तरफ घूम जाता हूँ ऐसे नहीं. मेरे बैट्समैन का ही रिव्यू ले पता चला आउट हो गया. भाई ये तो आपको भी रियलाइज हो गया होगा व्हेन यू कम आउट टू बैट, राइट? मतलब OTT के इंजीनियर्स घबरा जाते हैं कि आज ये वॉचिंग हम लोड ले पाएंगे कि नहीं. वॉचिंग 3x हो जाती है, पूरा स्टेडियम हिल जाता है. ये पहली बार हो रहा है कि आपके पहले जो बैटिंग करने आता है उनके आउट होने की लोग दुआ कर रहे हैं. तो आप हिंट लेके आप मतलब 2 डाउन ही आया करो ना, ताकि और बॉल मिले हमें. फिर मेरे ऊपर प्रेशर बन जाएगा ना. डिमांड और सप्लाई का गेम है. सो हमने बहुत सिंपल रखा है यार. अगर मैं इफ अदर्स आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल, व्हाई डू आई नीड टू गो अप द ऑर्डर. जैसे लास्ट ईयर की अगर आप बात करो तो T20 का टीम अनाउंस होना था वर्ल्ड कप का. सो यू हैव टू गिव पीपल अ चांस हु आर फाइटिंग फॉर दैट स्पॉट. हमारे टीम में वी हैड अ फ्यू. जडेजा वाज देयर, Shivam Dube was there. So unless you give them opportunity, they need to prove themselves and then get into the Indian cricket team. मेरा क्या था, मेरा selection हो नहीं सकता था. So I was like, I'm good behind. I'm happy with what I'm doing. My team is happy with what I was doing. So it was a lot of fun, and I just want to enjoy whatever last few years of cricket. I'm able to play. So वो जो बचपन में नहीं होता था 4 बजे हम लोग खेलने के लिए जाते थे. wanted to enjoy the game. But when you play professional sport, it becomes difficult to enjoy the game just like a game. So that's what I want to do. But as I said, it's not easy. वो emotion आ ही जाते हैं, वो थोड़ा commitment आ ही जाता है. But I want to enjoy the game, for the next few years.
years. वो एंजॉय करने के चक्कर में जो हार्दिक भाई को 3 छक्के पड़े, 3 छक्के मार दिए आपने। उनका सीजन वैसे भी ऐसे ही थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा था और आपने ऐसे बीच के छक्के मारे। इट्स पार्ट एंड पार्सल। कभी आप आउट होते हो, कभी आप रन बनाते हो, जो भी टीम को चाहिए उस समय, व्हाटएवर द सिचुएशन डिमांड्स, आप कोशिश करते हो। अब कई बार बॉलर अनफॉर्चुनेट होता है, कई बार हम लोग बैट्समैन अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं, सो इट्स पार्ट एंड पार्सल। कई बार जीतेंगे, कई बार हारेंगे, बट टिल इट्स फन, यू नो, played in the right spirit and with the right competition in mind, then why not? बीच में निकला। एक इंटरव्यू देख रहे थे मैं और कुल्लू, दीपक चहर जी का, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया कि कभी माही भाई से डांट पड़ी है कि नहीं, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था जहाँ पे आपने उनको स्पेसिफिकली कहा था कि दीपक भाई नकल बॉल मत डालो, फिर उन्होंने नकल बॉल ही डाली और फिर जैसे कि तैसे हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आपने थोड़ा बहुत आपके अंदाज में उन्हें डांटा, पर उन्होंने कहा कि उनको अच्छा लगा। और एक काफ़ी प्लेयर्स कहते हैं कि भाई भाई से डांट पड़ने के बाद बुरा नहीं लगता है, तो हमें टिप्पणी चाहिए थी कि अगर किसी को डांटना हो सबसे अच्छा तरीका क्या है डांटने का, नहीं, ताकि बेस्ट लेसन। सो अब दीपक ने अपना मुंह खोल ही दिया है तो मैं भी खोल देता हूँ। सो ये थोड़े काफ़ी साल पहले की बात है, एंड ही हैज़ बीन एन एक्सीलेंट क्रिकेटर फॉर अस, यू नो, जहाँ भी हमारे साथ खेला ही हैज़ डन वेरी वेल। पर उसका हमेशा कंप्लेन था मेरे से, भाई आप यार मुझे डेथ में बॉलिंग नहीं कराते हो। तो बोला यार अगर 4 ओवर तू ऊपर में इतना अच्छा डाल दे रहा है, विकेट ले रहा है, यू नो, व्हाई डू यू नीड टू बॉल इन द डेथ? जो भी उसके दिमाग में होगा, तो 4 ओवर डालता था, 90% ऑफ द टाइम ही वुड बॉल 4 ओवर्स, बट नॉट इन द डेथ। हम किसी और को यूज़ करते थे। तो ऐसे ही कुछ हुआ तो बॉलिंग हो रही थी, एंड ही स्वेट्स अ लॉट। मतलब स्वेट्स अ लॉट का मतलब है कि अगर खड़ा भी है ना तो पानी ही है। सो वो बॉलिंग पे था, मैंने बोला कि भाई उसको बहुत शौक होता है वेरिएशन का, बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, ही नोज़ व्हाट इज़ डूइंग, विल कीप हिज फील्ड्स। तो मैंने उसको यही चीज़ बोला कि भाई नकल बॉल मत डालना, बिकॉज नकल बॉल इज़ अ बिट डिफिकल्ट। उसके बाद इफ़ यू आर स्वेटिंग सो मच, यू नो, देयर इज नो फ्रिक्शन, हाउ विल यू बॉल दैट टाइम? बट ही नोज एवरीथिंग। ट्राई करना ही था। हम लोग जो एक्सपीरियंस है, जो दाढ़ी वाड़ी हमने सफ़ेद की हुई है, उसको लगता है धूप से हुई है। तो ऑफकोर्स ही ट्राइड, फिर 2 बॉल वगैरह हो गया, जो भी हुआ। सो मैं गया उसके पास, आई कैन नॉट से द एग्जैक्ट वर्ड्स बट आई सेड, बट मैंने उसको सिंपल चीज़ ही बोली। मैंने बोला यार तेरे तर्कश के सारे तीर मैंने थोड़े देखने हैं, मुझे पता है व्हाट यू डू, तुम्हारे पास वेरिएशंस क्या है, सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। सो यू बोल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो टीम को चाहिए उसके हिसाब से डालना। तर्कश के तीर तो मैं देख लूँगा जब मुझे मद होगा तब। उसको थोड़े ग्रामर थे इधर उधर, बट उन्होंने बोला था कि आपने उनको बोला था कि गलत तू नहीं है, गलत मैं हूँ जो तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ। दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि इतने मजबूरी के बाद, इतना सोचने के बाद मैंने बोला ये मत डालना, उसके बावजूद उसने वही डाला। मे बी ही हैड सो मेनी अदर ऑप्शंस, यू नो, दैट ही कुड हैव ट्राइड। मैंने तो एक ही चीज़ बोला था यार कि ठीक है, ये जो 50 लॉलीपॉप है ना, ये जो फ्लेवर है ये मुझे दे दे, उसको वही फ्लेवर चाहिए, बाकी 49 नहीं चाहिए। बट you know, at the end of the day he understood what is important is हम सब गलती करते हैं, बट हम उस गलती से क्या सीखते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और 2 गलतियाँ जो सेम होती हैं उसके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आप क्रिकेटर हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप बैट्समैन हो। एंड हाउ यू सेड ना, हाउ टू criticize people, yeah, how to tell them that what they have done is wrong. I always felt that it shouldn't be demeaning. A lot depends on the kind of relationship you have with the individual, and you know, you want to say stuff that helps the individual become better. You know what I've realized with the cricket team or us, you know, हम as Hindustani, अगर आप बोर्ड रूम में किसी को कुछ बोल दो ना, उनको बहुत ख़राब लग जाता है. बट इमेजिन यू एंड हिम इन अ टॉयलेट, आप 2-4 ग्रामर के साथ भी कुछ बोल दो ना, इट डजंट फील बैड. सो फ्रॉम द एसेंस ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इट गोज, अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अरे क्या बोला. सो ही हैजंट लिसन टू व्हाट यू हैव सेड, इट्स जस्ट दैट यू नो मुझे ख़राब लग गया, सबके सामने बोल दिया. सो इफ़ यू नो द इंडिविजुअल, यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट वे to work with him or her and get the best out of it. At the end of the day, if you're leading people, you know, you want to get the best out of them. Whatever their level may be, you want them to improve, but at the same time get the best out of them. यहाँ पे ऑडियंस में जो बॉस है, यस, अगले दिन लोगों को डांट रहे बाथरूम लेके जाके कि माई ने कहा था कि लैट्रिन के सामने डांटना, और वो सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर बोल रहे हैं.
बाथरूम में एक चीज ध्यान रखना, किसने किसको झापड़ मारा पता नहीं चलेगा, देयर इज नो एविडेंस। ठीक, you want to go? So, your stump mic conversations are hilarious. जो ऋषभ पंत के साथ हुआ था was very very funny. तो किसके साथ सबसे ज़्यादा banter है टीम में? It's not targeted banter, you know, जो भी उस समय जो कुछ कर रहा होता है, depending on that, you know, you try to say whatever, it turns out to be funny. ऐसे डालना है तो रख ले। So stuff like that, you know. ये सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं है वहाँ पे। एक छक्का लगा के दिखा। That is generally for people, जैसे क्रिकेट में क्या होता है ना, हमारा almost 80% of cricket happens right in the middle. तो स्पेशली जो फील्डर्स बाउंड्री पे होते हैं या 30 यार्ड पे होते हैं ना, आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट दे लुक बिहाइंड इन द क्राउड। नो, पहले तो 30,000 40,000 लोग हैं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एनीवन फ्रॉम दैट डिस्टेंस। आपका एक कैप्टन होता है, एक बॉलर होता है। सो जनरली ऑन द फील्ड दीज आर द टू पीपल हु आर इन चार्ज। अगर कैप्टन विकेट कीपर है तो आसान है, नहीं तो 3 इंचार्ज हो जाते हैं। अगर एक कैप्टन हुआ, एक विकेट कीपर होगा, एक बॉलर। इन द सेंस हो सकता है बॉलर को कहीं पे कुछ स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए फील्ड में, तो वो आपको will try to take your attention. But अगर कीपर और बॉलर है तो और आसान है। But I never understood, they always look the other way. So that's the time when you say कि उधर कौन है भाई, हमें भी बता दो। You know, I'm not able to see who's there. कुल्लू की एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी, मिसबाह उल हक ने जो स्टोरी बताई थी। प्लीज आप ऑडियंस को बताना और भाई को सवाल पूछ लेना। तो मिसबाह उल हक ने स्टोरी सुनाई थी कि आप शायद इंडिया या अंडर 19 में पाकिस्तान गए थे और आपने उनको बहुत रन मारे थे, बहुत ज़्यादा रन मारे थे, और उनने अपनी टीम को जो है बताया होता कि ये प्लेयर आ रहा है, इसको ज़रा ध्यान से खेलना। फिर आप जब नेशनल साइड में आए तो पहले मैच में जब आप कम रन पे आउट हुए तो वो जिन लोगों ने आपके बारे में खौफ फैलाया था उनको बहुत ट्रोल करते थे वो लोग कि ये तुम किसके बारे में बोल रहे थे। फिर आपने तीसरे मैच में जब 150 बनाया तो फिर वो लोग वापस ट्रोल करने लगे थे। तो आपको कुछ स्टोरी याद है उसकी जब आप फर्स्ट टाइम वो? स्टोरी नहीं, मैंने इंस्टा पे देखा था वो। सो दे सेड कि ये मारता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो मैं बांग्लादेश सीरीज में आई, hadn't scored, so उसके बाद वापस जब वो बैठे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आई गॉट माई फर्स्ट सेंचुरी। सो दे सेड कि ऐसा मारता है। नहीं, तो आप जब अगली साइड में गए थे, अंडर 19 इंडिया ए में गए थे, तब का कुछ आपको याद है कि आपने जो इतना खौफ कैसे बना लिया? टूर, सो हम लोग कीनिया गए हुए थे। सो इट वाज अ ट्विन टूर, जिम्बाब्वे और कीनिया का टूर था। जो कीनिया में इंडिया ए थी, पाकिस्तान ए एंड कीनिया की टीम थी। So that was the tour and I got a chance to open. You know, Dinesh was also part of the team, Dinesh Karthik, he got selected for the Indian cricket team. So वो चला गया and then I got an opportunity to play for India A and I was batting top of the order, you know, open में कर रहा था, one down खेल रहा था. So I got an opportunity and you know, it was a lot of fun. The condition was slightly challenging but also when you get a chance like that, you want to make the most of it. You know, and Pakistan was a good side. You know, Kenya की उनकी जो टॉप इंटरनेशनल साइड थी दैट वाज प्लेइंग, बट पाकिस्तान की ए टीम थी। सो लॉट ऑफ क्रिकेटर्स हु प्लेड विथ मी लेटर ऑन, यू नो, दे वर आल्सो पार्ट ऑफ द स्क्वाड। सो इट वाज फन एज आई वुड से, बट एट द सेम टाइम यू नो आफ्टर दैट टूर्नामेंट आई वाज श्योर दैट आई विल गेट अ चांस टू प्ले फॉर इंडिया। अब 3 महीने के बाद चांस मिले, 10 महीने के बाद चांस मिले, बट आई न्यू दैट आई विल गेट अ चांस टू प्ले फॉर इंडिया। सो दैट वाज अ ब्रेक थ्रू टूर फॉर मी। हाँ, वो बोल रहे थे गेंद वापस ही नहीं आती थी जब आप मार रहे। इसमें से ग्राउंड बहुत बड़ा था यार। इसमें से मैंने ये पिकअप किया कि माही भाई रील्स देखते हैं। माही भाई आप कभी कभी मीम आता है आपके बारे में, तो आप क्या करते हो? आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो, क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे की मीम्स में चले जाता हूँ। तो अपने बारे में क्यों देखना यार, जब पता है कि कुछ आने वाला है। व्हाई डू यू वांट टू सी इट? एंड आई एम नॉट समबडी हु गेट्स इनटू द कमेंट सेक्शन एंड रीड कमेंट्स एंड ऑल। सो अगर आपको कुछ पोस्ट करना है, आपने पोस्ट किया, बस दैट्स इट। डोंट स्टार्ट गेटिंग इनटू द कमेंट सेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज द पीपल सिटिंग यू नो टू हैव फन at whose expense, they don't really care. So they may say something, you know, that is not so nice about you. So the best thing to do is use it for what it is, and I feel that's what I do. So what do you use it for? So mostly, you know, I'll complain about also one thing. So you know, I'm a motorhead, so I love cars and motorcycles more than cars. So you get a glimpse into everybody's life. So whoever has a motorcycle, you know, they love to clean it up and they'll put a video. The only thing I never understood is when you put a video of your motorcycle, why do you put a background music? I would want to hear
the exhaust of a motorcycle, you know, the revving of a motorcycle. You know, imagine there's an old Kishore Kumar happening and it's a motorcycle and I am like, okay, I want to see this. You switch the volume on and then you realize, you know, there's no exhaust note here, it's something else. But yeah, you know, to keep a track, अब तो Instagram थोड़ा news channel की तरह भी हो गया, but you cannot trust everything. They'll put a picture and they'll write something and अच्छा ऐसा भी होता है, but you know, you have to go back and check with the news channel as to what really is happening. अभी तो ऑप्शंस के टाइम पता नहीं कौन कौन कहाँ जा रहा है Instagram के हिसाब से. नहीं, अच्छा वो तो यार अभी हर कोई मालिक बन के बैठा हुआ है, जिसको जो प्लेयर चाहिए, you know, he is coming into auction, we will buy him, we should do this. Auction is like that. Nobody knows. Like once people come into the auction, you don't know where you're going. And the best part is the fans. They are always like, ये auction में आ रहा है, अब ये इस टीम पे जाएगा. You are into the market. You know, whoever has the money to buy you, you know, they'll get you and you'll have to play for them. So that's the beauty of auction. You know, it's not a trade that you know कि A player is getting traded to B franchise. You can go anywhere. Auction is 7 letters. Thala for a reason. आपको भाई ये thala for a reason meme आपको पता है क्या है और ये क्यों है? और ये मुझे पता है, but I don't know the reason behind it. I don't know if it's funny or it is supposed to pull my leg or it's a banter, it's a meme, whatever it is. But I think my fans have turned it into something that's in my favor. You know, that's what I feel. Correct. And I've got brilliant fans. That's what I would say. You know, I don't need to open my mouth or say anything. You know, they are the ones. If they feel somebody has been nasty to me, they take care of it. So I'm just keeping quiet. I enjoy my life. I try to play good cricket, and that's what it is for me. No, it's not trolling. I think thala for a reason is. Thala for a reason is for respect. Good. Yeah. वैसा है. बट बाइक्स की बात हुई थी, 1 मिनट बाइक्स की बात हुई थी, तो आप अगर आप अपनी एक बाइक निकालो तो कितने महीने बाद आपको रिपीट करनी पड़ेगी? ये बाइक्स बहुत है, बट सब चलने की स्थिति में नहीं है. सिर्फ बॉडी बहुत है. Like I have over 100 bikes, but not all of them are in running condition. So you know, जब कोविड हुआ था तो I got a chance to spend a lot of time with the bikes. So जो मुझे पसंद थे, जिसके बारे में मुझे knowledge था, you know, so they're like 25-30 of them. You know, I got them back into running condition. And then उस समय deliveries वगैरह नहीं हो रही थी. But later on when the deliveries started, you know, I said ठीक है यार, इंजन तो अब काम कर रहा है, now make the cosmetic changes. So I did a lot of them. So if I'm right now, I'll be riding maybe 35 bikes. You know, I can easily do that. Then there are a few vintage ones where the brake is on the other side. और vintage थोड़ा experience खराब रहा है, काफ़ी बार धक्के देने पड़े हैं. So थोड़ा डर लगता है कि रोड में कहीं अगर खराब हो गई ना तो what to do. So the bikes that I trust, I know that you know they won't left me stranded. Otherwise, I take it for a ride. Vintage is also 7 letters. Just say it's thala for a reason. सर बाइक हो या प्लेयर, आप काम निकलवा ही लेते हो कुछ ना कुछ करके. भाई ये बेसबॉल का क्या ख्याल है? चल रहा है अभी, जो आप पहले करते थे अब ये लोग करने लगे. Yeah, you can give cricket any term that you want to. What we have seen is cricket has evolved. The way people are playing cricket is very different. You know, जब बहुत पहले जब वनडे आया था तो something was considered a safe score. अब वो बोलते हैं यार ये तो 20 ओवर में भी safe नहीं है. So you know, when you give something a term, it becomes much more interesting because you start talking about it, you start relating to it. But at the end of the day, what is it? It's a way to play cricket. Some people want to play aggressive cricket. You know, some people want to play authentic cricket. A lot of that depends on the kind of team you have got, whether they can change the way they play that cricket. You know, it's something that is very important. Not if there's something that can be done, not everyone can do it. You know, like let's say somebody like a Bumrah, he can bowl 6 Yorkers. Imagine somebody who's not able to do that. If you still ask him, he may improve over a period of time, but he may end up giving a lot of runs till that point. So what is important is to realize the strength of your team, and according to the strength of the team, you decide which is the way you want to play cricket. Maybe you want to change the way you play cricket, but it takes time. It doesn't happen that overnight you decide, अच्छा कल से हम ऐसा करेंगे. It doesn't happen. So you need to give time to individuals because they have played maybe 10, 12, 15 years of cricket since they started, and they have a certain way of playing cricket. You know, so you need to give them that time to change the way they play their cricket. Okay, you got something? आजकल हम देख रहे थे अभी बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच था जहाँ पे वी प्लेड आवर वर्जन ऑफ व्हाटएवर वी कॉल बेसबॉल. पर माय भाई ऐसा भी एक
ज़माना होगा जहाँ पे पुराने ज़माने में जब टेस्ट मैच जब चलता था, 4 दिन बैटिंग, 4 दिन एक टीम बैटिंग करी है. डू यू रिमेंबर एनी टेस्ट मैच वेयर यू फेल्ट लाइक कि भाई डिक्लेयर करते ये हो क्या रहा है कि आप बॉलिंग साइड से और फिजिकली चैलेंजिंग आपको काम करना पड़ता था आपकी. So for me, the most difficult time during a test match was the 5th day of the test match, which is the last day, and जब 100% surety है कि ये draw होने वाला है, and you still need to keep for maybe 2.5 session, and that was the most tiring. Well, you see, there's no result that is happening. You're just going through the motion. Yes, bowlers will like to take wickets. Batsmen will try to score runs. But if there's no result in the nearest future, you're like, yaar, ye khatam karke chalte hain na. Why do we need to be here? So I love the fact that in between, there's a big change in the way people started playing Test cricket. A lot of the wickets were very juicy wickets. So let's say, if you're playing in England, Australia, South Africa, the wickets were in favor of the bowler. In India, we used to play more on the spinning track, and that's the challenge that you have to face. And you knew that, okay, if the game goes on till 4th or the 5th day, you will get a result. Imagine telling someone who doesn't know about cricket, we play over 5 days. We start at 9:30, 4:30 is the scheduled end of day's play, but we play till 5 o'clock, and after 5 days, sometimes we don't get a result. So that can be very, for the game, it's not very nice. Yeah. So I love how there's more results in today's world. Even if you're playing only 4 days of cricket and if one day gets washed out, more often than not, still you'll get a result. So that's the beauty of Test cricket, and I feel that's how it should stay. You want to get a result after 5 days, you shouldn't have a draw. कभी-कभी, my bhai, when you wanna get a result in your favor, part of doing that is taking risks. And as captain, जब कभी आप risk लेते हो and it doesn't pay off, is there a guilt associated when you lose a match? Do you feel bad? Like how do you let go of a risk that you took and it didn't pay off? Do you think about it often? It's like life. There are certain types of risks that you have to take, and Duncan Fletcher used to have a very nice saying. Their risk. It was actually tricky how he used to say it. So their risk you can afford. You cannot afford not to take, but there are certain risks you can afford not to take. So it was very confusing for me, but basically what he meant is in life there are certain times you have to take the risk, but certain times you can avoid that risk. सुन रहे हो traders? अच्छा FNO वाले आए हैं यार, ये रीगी का इवेंट होता है, मार्केट की आप लगा देते हो. पिछले बार भी हुआ था ऐसे ही कुछ तो. हाँ, मैं अब अभी वेरी स्मार्ट पीपल अभी बोलेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी है. Buy the dip. भाई साहब पैसे डूब रहे हैं, आप बोल रहे बाइंग अपॉर्चुनिटी है. एंड द ब्यूटी इज एवरी सेकेंड डे दे गिव अ थर्ड आइडिया कि ये कैंडल बन गया है, वो कैंडल बन गया है, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. इट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स हैपन एंड दे जस्ट स्विच ओवर. वो भूल जाते हैं कि कल मैंने क्या बोला था. दे स्टार्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली. सो हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेड? ओके, जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. ऑल द प्रोफेशनल ट्रेडर्स, यस, दे विल कीप ट्रेडिंग. जो यंगस्टर्स हैं, प्लीज़ FNO में मत घुसना, निकालना मुश्किल हो जाएगा. इफ़ यू रियली वांट दैट थ्रिल इन लाइफ और जो एड्रेनलिन का रश चाहिए ना, डू सम अदर एक्टिविटी. डोंट ऑलवेज गो इन यार मैं आज 5,000 का लगाता हूँ, देखता हूँ क्या होगा. It's not for you. The professionals, yes, they can handle it, but other than that, have a lot of fun with stock. Keep it. It's not going anywhere. FNO is knuckle ball. FNO is different level altogether. Nowadays when you log into the whatever app you are using, first thing it says 90% of FNO users lose their money. मैं बोलता हूँ ये 10% बाकी कौन है? So basically those 10% are the ones who are eating the 90% of us. They are eating our money and they are making their money. Wow. Yeah, that's why I stopped. आप चेजिंग माई बाई पे छोड़ देना. हाँ. क्रिकेट से कितने जल्दी हम शिफ्ट हो गए ना. नहीं, मैं देख रहा हूँ आप क्रिकेट के बारे में इतने पैशनेट, स्टॉक के बारे में एकदम आपके अंदर से गुस्सा निकला. नहीं यार, FNO में लॉस होता है. आप स्टॉक की मैं बेस्ट बात बताता हूँ. आई लव सो
बहुत ज़्यादा मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, बट स्टॉक के देखता हूँ सवेरे एक बार क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है. सो लेट्स से आई हैव अ स्टॉक विच इज़ A. तो जस्ट फॉर रेफरेंस कि मैंने 1000 रुपये में लिया था. सो इट गोज़ अप, समवेयर इट हैज़ गॉन टू 1800. सो 1800 2000 होता है, देन कम्स बैक टू 1800. नाउ द नरेशन इस टिप पे ना खरीदना चाहिए. एंड आई एम लाइक मेरे 1000 के 1800 हो गए हैं, ये डिप पे जो खरीदेगा उसके बाद जो डिप आएगा वो कहाँ जाएगा. ये है डिप पे खरीदने वाली ये है. सो आई ऑलवेज गेट वरीड कि ऑल टाइम हाई पे जब रिकमेंडेशन आती है ना, इसका आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अभी लेने का टाइम है. मतलब मैं नहीं ले रहा भाई, ये कहीं के चांद पे भी चला जाए मैं नहीं ले रहा. इट इज़ आउट ऑफ माई टारगेट सिस्टम. सो बट दैट्स हाउ इट इज़. पीपल वॉन्ट टू राइड इट, बट at least with the stock, the great thing is the stock is in your account. You may have a loss 10-15%, 20%, 25%, but if you have bought something that has the right fundamentals, you won't make a big loss. You will get your money. FNO में खाता नहीं लगाएंगे FNO भाई इसका. हाँ, ये बोलेंगे भी स्टॉप लॉस जरूर रखना. My bhai, did you learn any? What's the best money advice that someone gave you, maybe early on in your career, or कि FNO में मत लगाना. FNO वाला? नहीं यार, FNO तो नहीं. I feel best advice is I don't want to go with what my parents used to say about the fixed deposit, because you end up losing money, with the inflation and everything. You want your money to grow. Don't look for multiplication. Wherever there's multiplication, there's risk involved. So if you are conservative, the money, you'll be good. The whole problem is when people start looking for multiplication. So everything has a pro and a con side. So whenever there's rewards are high, the risk also is high. So you need to be comfortable with it. And if you invest right, and invest is the right word, if you invest right, you always have money with you. And I feel if you're looking to grow the money, you'll be good. You'll be doing well in life. Okay. So what's the best relationship advice you've gotten? They're waiting to troll me on this Relationship question. advice. Yeah, they're waiting. They were waiting for me to ask this question. Not at It's all. really Not at fun. all. Best relationship advice? Best relation. I know you've said ki listen to your wife, but what else? So how many of you are in a relationship? Not married, but in a relationship. Youngsters कोई हैं? So basically girlfriend को सिर्फ हाँ ही बोलना है. ये उधर से start होता है, because it's like early studies. तो वहाँ से जब आप फाइनली मैरिड हो चुके ना, आपको हाँ हर चीज़ में बोलना पड़ता है. तो पहले से आदत डाल दोगे तो बाद में मुश्किलें नहीं आएंगी लाइफ में. सो इफ़ यू थिंक, मेरा एक और फेवरेट लाइन है, मेरी वाली अलग है. इस बात पे सारे हंसते हैं, बट आई थिंक द ब्यूटी इज once you get married, or if you're in a relationship for a long time, you start understanding each other. A lot of times you know what's going to happen. So in my case, in my house, I know when something is going to fall, because Sakshi is moving around which table. And it happens. And that's where the relationship goes, So we have been married for now 14 years, 2.5 years of dating. And you know the ins and outs. The wife will know how to irritate the husband. The husband will know what question is coming. Another one of the good advice is, somebody asked me, okay, in a relationship, when the lady asks a question, what should you reply? So it starts with, you have to be honest, you have to say the truth and everything. Once you get married and after 5, 10, 15 years, you answer so that the next question doesn't come. Right and wrong is not important. Next question shouldn't come. Otherwise it keeps on coming. And another thing is, when you ask one of your friend, they'll be like, my wife also asks the same question. So basically the faces are different, the questions are the same. And whatever I have said, it is actually 100% applicable on the man also. We also commit the same mistakes. We are also irritating. We love to pull the leg, but at the same time we are not very good when it comes to accepting the jokes on us. So I think that's why it's a perfect combination. And the essence of marriage is, after 50, 55, you have kids, the kids go to maybe a college or a hostel, and that's the time you are just with your wife, and you're having whatever that companionship, and
you talk about the times that have gone by. So the essence will come later, but you have to survive the marriage till then, to enjoy marriage. आपने कहा कि the men also commit mistakes that they are irritating. तो आप में कौन सी qualities आपको लगता है कि your wife finds irritating about you? Well, I think most of the things that I do irritates her. That's what relationships are for, So a lot of things happen. I don't know what. So generally, we don't like to get into confrontation. If the questions are tough, harsh, we get up, we go somewhere, we find a place. Usually, men will find a corner and they'll be happy. In my case, I cannot find a corner, so I have to get into the garage. अरे मुझे वो बाइक बनानी है यार, I'll forget otherwise. वहाँ जाके कैंडी क्रश. नहीं कैंडी क्रश नहीं, फिर वो बाइक में लग जाते हैं. Because the bike never complains. Even if you do it wrong, I don't know why you're laughing. I'm serious. Has your bike ever complained? ये कोड बनेगा आपके नाम से. No, but that's how it is, And my wife now, even if I tell her, okay, let's go for a ride. She's like, no. गाड़ी में जाना है तो बात करो, बाइक में मैं नहीं जाने वाला. So I'm like happy, okay, I'll go for a ride and I'll come back. Nice. So if not confrontation, how does the ice break? Sorry? How does the ice break between two of you? कि लड़ाई हो गई है तो अभी Now we're in लड़ाई fight. end कैसे करते हो आप? So initially, this I'm talking about 2010-11. So initial that breaking in period. So at times she would get angry with me and she won't talk to me. She won't talk to me for 3-4 days, 5 days. I was like okay with it. Then she realized, if I fight, if I'm quiet, he's happier. The game plan changed. So now she कैप्टन fights. कूल बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? She fights, or we fight. That's better way to put it. So whenever we fight, she goes outside, she comes back, and as if she never fought with me. I still have it, like we had a fight. She's like, hardly matters. She's moving on in life. आपको लगता है सिर्फ आप ही कूल हो क्या? I am also cool as cucumber. नहीं लेकिन सर वापस कमिंग टू कि अब तो कॉपीराइट वगैरह आ गया है, आपकी फोटो वगैरह का यूज़ होती है, लेकिन मेरे को याद है कि मैं भोपाल में रहता था और आपका वो श्रीलंका वाली इनिंग थी, उसकी आपकी एक फोटो ऐसे दोनों हाथ उठाते हुए 183 आपने वो फोटो कहाँ पे छपी हुई है? वो एक बेर के पाउडर का पैकेट आता था, उसमें भी छपी हुई, 1 रुपए के 4 पैकेट आते थे, उस पर भी आपकी फोटो छपी हुई थी, आपके नाम से बेचे थे. कभी कभार ऐसा हुआ कि आप देखिए खुद ही चौंक गए कि मेरी फोटो कहाँ लगा छपी है. 2009-2010 में आप किसी भी नाई के पास जाओ, बाल की फोटो तो रहती थी वहाँ पे. फोटो वो लंबे बाल. I'm happy. God has been kind. I've got a lot of love and affection throughout wherever I've been, and I don't see any harm in that. So it's not like a big MNC is doing something wrong or using my image to make a lot of money. So it's more from a fan's perspective. I can still understand. People may say, okay, they shouldn't use the picture in this, that, and all of that. But at the end of the day, how many can you stop? पर आप शॉक हुए कभी कहीं ऐसा अपनी फोटो देख के कि ये कहाँ लगा थे? नहीं ऐसा शॉक तो नहीं हुआ. It takes a lot, for me to get shocked. So no, I've never really got shocked. Like okay, ये क्या है? भाई ये एक पर्सनल सवाल था कि ये गोल्फ का सीन क्या है? ये सारे स्पोर्ट्समैन रिटायर होने के बाद गोल्फ क्यों खेलने लगते हैं? और आपने ट्रम्प जी को आपने जीतने दिया कि आपने वहाँ पर भी? I'm quite intelligent, I've handled the team for very long. I became his partner. So we were partners. So there was no way in the world, the opposition was winning. So he won quite easily. And I don't think the other team had an option. So, but golf, I feel cricketers. I think golf is very different, because I also play golf and I've realized, मेरा जो cricket का game है ना, it's very different. So for me, I have to hit the ball hard. Golf में you're not supposed to hit the ball hard. You use the club, and if you want to hit longer, you use a different club. So you basically have a nice swing. The club does the trick for you. मेरा वैसा नहीं है, मैंने जोर से मारना. So even if I tell myself, कि नहीं बॉल रखा है, just swing, have a normal swing and hit the ball, it will go. बट उसमें मजा आता है सर, जेन्युइनली मजा आता है, ईमानदारी. नहीं मजा आता है. First initially I thought it's a very boring sport. Then I played. So basically you're fighting against yourself. Whatever, let's say, you finished the game in 98 strokes. So next time when you go, you want to do a 96, 95. So you're not competing against the opposition because your handicap is set. So basically what you're doing is you're competing against yourself.
So I don't know about any other sport, or there may be not many sport where you can compete against anyone. So even against the top golfer in the world, you can play and compete because you get strokes according to your game. So he'll be giving you strokes. So let's say if he finishes in 72 strokes and you finish in 95 and your handicap is more or less, and then you can still win. So the pressure is always balanced, but you have to be consistent with your game. Nice. Tala for a reason. I love playing golf with Tala. भाई एक स्टोरी मैंने और कुल्ले ने सुनी थी about how in Dada's last test match you allowed him to last session में आपने उनको कैप्टनसी करने दी थी. उन्होंने तो एक पॉडकास्ट में मेंशन किया था, आपके एंड से हमें स्टोरी सुननी है, which is what a nice gesture. How do you think of it? And फिर आपने apparently एक बार पूछा, उन्होंने resist किया, फिर आपने दोबारा पूछा. Where did that thought come from? Well, it's very simple, He has been one of the greatest captains that India has ever produced. So what's a better farewell you can give from your side? That's the last day he's standing on a test match field, playing the game. And, if he can say goodbye leading for a while, then why not? It doesn't really change the result of the game. So, that was the reason behind it. And I don't know whether he enjoyed it or not, because it came all of a sudden. It wasn't planned that, this is what you should do. But I thought, that the best way of him, giving a farewell, leading on the field, even if it's for 15-20 minutes, then why not? Would you like the favor returned to you? Like, is that something that you would like? एक तो ये handover कैसे होता है? ऋतुराज भाई देख रहे हो कि नहीं? But being a wicket keeper, you're always the vice captain of the team, in the sense your hands will always move. You may not do the bowling changes, but what you're still doing is setting the field, taking the DRS call, whether it should be taken, not taken. So you're always a vice captain. So I always felt the wicket keeper is always the vice captain of the team. So you're still doing what a captain does, almost, apart from taking those crucial decisions. And you're not owing up to the responsibility, the captain का tension है. I was really trying to help the captain. ऋतु तू देख ले अभी. मेरे तरफ से हो गया, बाकी तुम्हारा headache. Was April 2nd, 2011 the happiest day of your life? It's very difficult to say whether it was that particular day or not, but it was a very memorable day, because it's very difficult to differentiate. We have had some very good cricketing moments, throughout the career as a team, as an individual player. So I would say that it was one amongst the best moments that I had. And, the more we are able to recreate that moment, and I'm not saying me as an individual, but, the Indian cricket team as a team, for the nation, that will be the best, because that's what cricketers want to do. We want to contribute so that the country is able to win the big tournaments, the World Cups, the champion trophies and all the big tournaments. So it gives a sense of satisfaction, and especially if it's happening in India, 40-50,000 people on the field, singing the song, being with you throughout, that makes it even more special. What other day comes close? Well, the 2007 when we won the T20 World Cup, because we had a very tough time in the 50-over World Cup the same year, in West Indies. So we were coming out of it. So the tournament was in South Africa. Once we came back, landed in Mumbai, it was cloudy, it was raining. So you're like, okay, fair enough, catch your flight and go back home. But, the reception was amazing, right from the aeroplane, lots of people, we don't know how the immigration happened. Then we got into the double-decker bus. It was raining, but there were people on both sides of the road. So, that was very memorable. Again, it was quite similar to the kind of reception the Indian team got now once they won the World Cup. So, I feel, moments like these are very special, and you always cherish them, throughout your life. Before we head into the audience, कुल्लू एक last क्वेश्चन फैंस के बाद ऑडियंस से बात करेंगे. सर, हमने एक वीडियो देखा जिसमें आप पार्टी में गाना गा रहे हो. अगेन आपके बहुत खास फ्रेंड दीपक चहर ने डाला है वो वीडियो. तो आप जनरली पार्टीज में डू यू सिंग, एंड व्हाट आर योर 3 फेवरेट सॉन्ग्स यू सिंग इन द पार्टीज? नहीं, मैं ऐसे पार्टीज में बहुत गाता नहीं हूँ. हाँ, जैसे टीम एनवायरनमेंट अगर है तो आई डोंट माइंड, बिकॉज व्हेन यू आर द कैप्टन नोबडी सेज यू सिंग गुड और बैड. यू जस्ट क्वाइट, एंड they are always under that pressure. अच्छा मैं खराब कर रहा हूँ, तू गा, चल खड़ा हो जा.
I love Kishore Kumar songs, you know, so any one of Kishore Kumar song I would love to sing at the right time. Don't say now. नहीं अभी नहीं बोला, हम सिर्फ गाने जानते थे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे. But yeah, I'm a big Kishore fan, so आज दीपक चैर को फोन जाने वाली है कि तूने क्या-क्या बताया. हमें पूछना है कि और क्या-क्या बोल के आया है. Alright guys, should we open it up to the audience? Yes. Yes. Okay. Hello. All right. We'll start from here. Okay. This side. Yes, sir. मैं फेनो रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ. हाँ. I'm just saying. सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ. भाई मेरा एक क्वेश्चन था आपसे. when you were retiring yourself, right? जब आप रिटायर हो रहे थे, उस टाइम पे you must have got mixed feelings as per my idea कि यार एक है कि हम इस गेम के किंग हैं, अभी और खेलना है, अभी थोड़ी ये फीलिंग है. एक साइड होगा यार I would miss this game much. एक साइड होगा नहीं अभी मुझे नहीं खेलना है, would be done. How would you come out of those mixed feelings and अभी इतने टाइम बाद like how do you feel after that? Well, you know, it is always very difficult to take a decision like that because whatever I have got or cricketers we get in our life, it is predominantly because of cricket. That's amongst the only things, you know, that we know how it needs to be done or what needs to be done. So it's always difficult, but if you pick the right reasons why you need to do it, in the sense why you need to leave it, it becomes quite easy to take a big decision like that. So it wasn't very difficult for me. So in my mind, I'd actually retired after the 2019 World Cup, you know, because after that the next World Cup was too far away. If I'm not wrong, they just delayed the T20 World Cup by a year. So next year was the T20 World Cup. So I was like, you know, there's no rush of announcing a retirement, but in my mind and in my actions, I was done. So effectively, if you ask me when did I retire, I retired in the 2019, you know, World Cup semi-finals. You know, for me that was the end of it. And then later was a decision that you finally took. वो तो announcement हुआ ना, decision तो पहले हो गया था. It was more an announcement for everyone, you know, that finally the closure has happened, you know. वो वीडियो एडिट होने में भी टाइम लग गया. रेंडर हो रहा था. लंबा वीडियो था वो. हाँ, थोड़ा इंटरनेट स्लो था. Thank you so much. Thank you so much. That was also Kishore Kumar song. मैं पल दो पल का शायद. मुकेश. Such a heartbreak it was. Okay. धोनी भाई यहाँ पे सर, यहाँ पे सर, धोनी भाई यहाँ पे है सर, लास्ट यहाँ पे सर. यस राइट. अगली बार ऐसे करना कि हाथ ठीक है सर. माही भाई अभी तो सबने बोल दिया है कि आपको कैप्टन कूल या दुनिया भर के लोग बोलते ही रहते, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मैच में जीतने के लिए स्लेजिंग जरूरी है? नहीं, मैच जीतने के लिए स्लेजिंग ज़रूरी नहीं है. स्किल सेट होना ज़रूरी है. जो आपने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्लेजिंग, बट येस, फ्रेंडली बैंटर, थोड़ा पैर खींचना, थोड़ा कुछ बोलना, आई एम फाइन विद इट बिकॉज इट जस्ट एड्स अ बिट ऑफ स्पाइस, you know, in the cricket that is happening. But sledging is not the most important thing. Skill set होना ज़रूरी है because also we are thick skinned in the sense में मोटी चमड़ी के होते हैं. ऐसा नहीं कि कोई कुछ आके बोल देगा तो you know we'll change our plans, and almost 90-95% of the cricketers are like that. But still अगर आप sledging करके if you are able to you know get hold of somebody's nerves, they may do something silly, but more often than not, you know, you won't. But there are certain cricketers जो कि गुस्सा हो जाते थे तो they were the targets. More often than not, they will be the people who will be targeted. You know, थोड़ा कमेंट करके लोग जाते रहेंगे. लेकिन दिनेश कनेरिया को सर आपने कंटिन्यू 2 छक्के तो लगाए थे. स्लेजिंग का पार्ट नहीं है वो, क्रिकेट था. छक्के मारना स्लेजिंग में नहीं आता. थैंक यू सर. लव यू. Hi Dhoni, this is Alicia Fernandez from Prime TV, and I would like to first of all inform you that we have waited last time to see you play in Goa, but due to some reasons previously Goa match got cancelled of yours. So how is it being here in Goa, and tell us about your relationship with Goa? मुझे तो लगा रिफंड मांगने वाली है मैम कि वो कैंसिल कर दिया सर आज. नहीं, एक ओवर यही खेल के दिखाओ. बट गोवा में इंटरेस्टिंगली काफ़ी बार हमारे मैचेस वॉश आउट हुए हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे कुछ समय पहले. इट वॉज अ कंप्लीट वॉश आउट इन द सेंस कुछ हुआ ही नहीं. यू नो, आई डोंट इवन रिमेंबर विच साइड वी वर स्टेइंग. तो हमने ना वो एक जिप्सी हायर करके
माई वाइफ वॉज ऑल्सो हियर, शिट कि हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे. सो वी वेंट टू जस्ट गो अबाउट. उस जिप्सी में ना हॉर्न नहीं बजता था और ब्रेक नहीं लगता था. इन द सेंस हॉर्न काम नहीं कर रहा था और ब्रेक बहुत कम था. एंड माई वाइफ इज लाइक तेज चलाओ तेज चलाओ. मैं किधर तेज चलाऊँ. एंड द बेस्ट इज वी वेंट ऑन द अदर साइड एंड शाम को ना इट स्टार्टेड रेनिंग एंड इट्स एन ओपन जिप्सी. सो देन समहाउ वी गॉट वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, यू नो, जिससे दोस्ती हुई, भाई ये जिप्सी तू पकड़, तेरा गाड़ी हमें दे, हमें वापस जाना. But yeah, you know, Goa is it's different. So my wife is a big fan of, you know, beach. She loves beach, water. She loves Goa. She's like a brand ambassador for Goa. वो कहीं भी अगर गोवा का टॉपिक आ जाए, she can speak for half an hour. So Goa is one thing. Second is hostels. Anybody who has been in a boarding school, college, anywhere, she thinks that they are batchmates. So she loves Goa. I get that Goan attitude when I am here, very laid back. So I came here 3 days back. पहले 2 दिन ना मैं रूम से भी बाहर नहीं निकला था. So imagine I'm right next to the pool. The beach is like 50-60 yards, and I was in my room. I didn't even get out of the room. So that's me, you know. कौन सा रूम नंबर है सर? रूम नंबर कौन सा है? I just forgot, you know, because they take me from a buggy. So अच्छा रूम नंबर याद रखने की जरूरत नहीं. ये हमारे जैसे लोगों को याद रखना होता है. All right. Next question. This side. Yes. Good evening, sir. Hello. So, back in the year 2009-10, आप एक बार, I am from वाराणसी. आप एक बार वाराणसी आए थे with आरपी सिंह. एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी किसी से. तो आप एक बार वाराणसी कनेक्शन के बारे में आप बताएंगे सर? सर ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई थी. वो न्यूज़ में हेडलाइन थी, धोनी आए और चले भी गए. और वो सीक्रेट थी तो अब नहीं रही सीक्रेट. बताते हैं आपको सीक्रेट क्या था. न्यूज़ हेडलाइन आई थी, धोनी आए और चले गए, तो और क्या करना था. धोनी के आए और चले गए और पता भी नहीं चला. इट वॉज मोर ऑफ अ रोड ट्रिप. हम लोग दिल्ली से रांची आ रहे थे. सो वो बड़ी मैंने एक हमर ली थी, यू नो, H2. सो वी वर ड्राइविंग इट. सो बनारस हम घुसे थे नाश्ता करने के लिए. सो वी वर गोइंग नॉन स्टॉप. सो वी जस्ट स्टॉप देयर फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स नाश्ता करके. देन वी वेंट अहेड. सो दैट वॉज द होल थिंग. एंड आई वॉज सो स्केयर्ड क्योंकि एक तो ये गाड़ी बहुत चौड़ी है. मैंने अपने फ्रेंड को दे दी, बोला मेरे से नहीं चलेगी भाई. सो व्हेन यू आर सिटिंग ऐसा लगता है ना रिक्शा तो मेरे नीचे आने वाली है. आई एम टेलिंग यू, आई वाज सो स्केयर्ड. आई वाज लाइक आई कैन नॉट ड्राइव ओवर. या मैं किसी ना किसी को धक्का मार ही दूंगा. सो माय फ्रेंड एक्चुअली ड्रोव. सो ही टुक इट इनसाइड. वी हैड आवर फूड एंड एवरीथिंग. व्हाइल इट्स कमिंग बैक द मोमेंट वी हिट द हाईवे लाइक आई एम कंफर्टेबल ड्राइविंग नाउ. तो यही थी सीक्रेट मीटिंग नाश्ता. अभी तो शायद ट्रैफिक कम हो गया ना. ये हाँ है ना. मलइयो थी सीक्रेट मीटिंग उनकी वहाँ पर. Lots of Varanasi also has a lot of hostels. अच्छा किस टाइप के हॉस्टल की बात कर रहे हो? हॉस्टल्स बता रहे हैं. एक वो ओल्ड एज वाला हॉस्टल भी है. नहीं वो तो ठीक है, but a lot of new hostels are there. जैसे since your wife is a fond of that, so maybe you can try visiting again. Definitely I would love to go. यार मैं गया नहीं पिछले I don't think last 10 साल में मैं गया हूँ. You know, now so beautification वगैरह हो गया है. You know, everything is massive over there. Cricket stadium भी बनने वाला है. Roads चौड़े हो गए हैं. So there's a reason for me to go over there. But let's see जब बुलावा आएगा जाएंगे. बहुत जल्द आएगा. Thank you sir. वो एक्सपेक्ट कर रहा था कोई जूसी स्टोरी. उसे मिला पोहा. पूरी सब्जी खा के निकल गए. हेलो माई भाई, गुड इवनिंग. माई भाई आज आप देखिए, आज की डेट भी 2+5 7 है. थला फॉर अ रीज़न. और सर आपका डेट ऑफ बर्थ भी देखिए जुलाई 7. आप तो पैदा हुए 7. आपको कैसे पता मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है असली है? सर और गूगल पे तो यही दिख रहा है. इवन डेट आप देखिए, ईयर भी 81 है. 8 - 1 7. तो सर 7 से आपका गहरा नाता है और हम लोग बहुत इमोशनल है आपका जर्सी नंबर 7 को लेकर. तो सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि डू यू बिलीव इन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी? नहीं सर, मैं आई वोंट से आई डोंट बिलीव, बट आई डोंट गेट इनटू इट. तो बीच में ऐसे ही फ्लाइट में काफ़ी टाइम पहले एक सज्जन मिले थे. उन्होंने बोला अगर आप अपना जर्सी नंबर 7 से बदल के ये कर लोगे ना, आप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बोला सर ये बताओ, आज 7 से मैं जो विलेट से 7 से मैं 11 करता हूँ. हु इज स्टॉपिंग मी नाउ फ्रॉम 11 to 13, 13 to 20, 20 to 25. आप हर चीज़ लक के ऊपर नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू बिलीव इन हार्ड वर्क. यू हैव टू बिलीव इन डेस्टिनी. सो आई वाज लाइक, मैं बिलीव करता हूँ बट आई एम वेरी हैप्पी विथ नंबर 7. नो सो आई विल स्टिक टू नंबर 7. मैं इस भंवर में नहीं घुसना चाहता हूँ जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाए. एज
you see, cricket is a very superstitious game. You know, so most of the cricketers, they have superstition. मेरे से मत पूछना, मेरा cricket खत्म हो गया, so I'm not telling you my superstitions. But that's how it is. So I never got into it for a simple reason कि I would rather think about what is wrong in my technique, where I need to put in the hard work, rather than सोने से पहले ना यार 7 की जगह ना 21 कर देता हूँ, तो कुछ तो फायदा होगा उससे. मैं तो ये सोच रहा हूँ वो कौन आदमी जो आपको कह रहा है कि ये कर लो और सक्सेसफुल हो जाओगे. आपको कहना था इधर देख 5 IPL ट्रॉफी वहाँ है, ICC वहाँ है, और क्या चाहता है तू मुझसे. थैंक यू सर, थैंक यू. Alright, I think that's it in the Q&A session. Guys, had a good time? If yes, then please put us together. Make some noise, guys, come on! For my bhai, for Tanmay Bhat, for Aditya Kulshrestha and Karishma Mehta. Guys, thank you so much. We will request you to get up for a group picture. Yes, please. Picture time it is. We create memories here. Guys, यार थोड़ा शोर में मजा नहीं आया. Guys, don't do this. Don't do this. Fabulous discussion. It was spectacular session with the OGs of our industry, of course.